Look, at this virtual platform, we can connect multiple hard disks very easily. So first of all, we will connect across 4-5 new hard disks with this machine, Windows Server 2016 machine. Okay, पहले हम कनेक्ट कर लें, then power on करेंगे मशीन को. Yes. Yes. Now, hard disk, add hard disk, next, NVMe, it's okay, 60 GB, doesn't matter how much space we should specify, 60 GB, next, finish. One hard disk, in this way, second hard disk, 80 GB, next, finish. Then again, add NVMe 60 GB, finish. 3 hard disks. Now, again, I'm going to add one more hard disk, 80 GB. In this way, I have just added 4 new hard disks. 4 नए हार्ड डिस्क जोड़ लिए हमने, एक हमारे पास पहले से है, यानी टोटल हो गए 5. करेक्ट? Yes, sir. फाइन. अब देखिए, ये सारे हार्ड डिस्क के लिस्ट, 2 60 GB के, 2 80 GB के. नाउ आई एम गोइंग टू पावर ऑन दिस मशीन. Fine. BCA.
Okay, fine. Now server manager is open. First of all, we will see the disk management. Sorry. Disk management service of this server. Command is disk mgmt.msc, or you can open it in another way also. I have used command disk mgmt.msc. Fine. Now, just I'm going to cancel it. Now see, our computer, our server operating system has detected total 4 new hard disks, but these hard disks are down right now. ये सारे down हैं, like disk 1, disk 2, 3, and 4. Now disk 0 is okay. This is the basic disk. At this hard disk, we have installed operating system. Fine. समझ रहे हैं बच्चे, ये 4 नई हार्ड डिस्क है हमारी। यस सर। जो कि इनिशियलाइज नहीं है और डाउन है। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इनिशियलाइज दीज हार्ड डिस्क। हम सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करें, ठीक है। तो राइट क्लिक, फर्स्ट ऑप्शन आई हैव यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, इनिशियलाइज डिस्क। अभी पूछ रहा है क्या सबको करना है, तो आप या तो बारी बारी से करें, you can do it all at a time. Okay. Now fine. Now the all hard disk type is basic disk. Yes. Because there are 2 type of hard disk, basic disk and dynamic disk. Okay. Yes. All are basic disk, and at a basic disk, which type of partitions can be created? जैसे आप लोग नॉर्मली अपने मशीन पे किस तरह के पार्टीशंस बनाते हैं? कोई भी जन? किस तरह का मतलब सर, समझ रहे हैं? मतलब आप सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क पे आप पार्टीशन कैसे बनाते हैं? सर डिस्क मैनेजमेंट से ही उसके साइज को स्प्लिट, उसके साइज को स्प्लिट कर, तोड़ के उसके लाइक अच्छा चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे जैसे यही हमारा है, मान लो ये 4 हार्ड डिस्क नहीं है हमारे पास, और दिस इज द सिंगल हार्ड डिस्क इन माय कंप्यूटर, इन माय सर्वर मशीन. If we have to create a new partition at this hard disk, then how can I create? Please guide me. सर अगर एक ही पार्टीशन है, सब स्पेस उसी में है, तो पहले उस ड्राइव को श्रिंक करें. Fine. Then श्रिंक करने के बाद जो स्पेस अनअलोकेटेड हो जाएगा, right, उसके बाद न्यू ड्राइव उससे क्रिएट करने. Fine. यानी कि this is my unallocated space. Yes. And now I'm going to right click on it, and I can create. Actually, I'm seeing multiple options, but you can create a simple volume. Yes. Normally at a local machine or laptop, and particularly on all those machines at which there is only one hard disk. Fine. Yes. But in this case, I have connected multiple hard disks. That's why I am getting some more information like spanned volume, stripped volume, mirrored volume, and read volume. Fine. Yes. Yes. You can get these options if you will connect more than one hard disk in your PC. Like 2 or 3, at least 3 new hard disks. In that case, you can get these options at your Windows 7, 10 machines also, like spanned volume facility, stripped volume facility, mirrored.
But RAID is not available at client operating system. RAID is only available at the server machine, server operating system. Okay? Yes, sir. Fine. Yes. Now, suppose we have to create these volumes. But my dear friend, these volumes cannot be created at a basic disk. It is always created at a dynamic disk. Okay, if you have not converted your basic disk into dynamic disk, but you are trying to create these partitions, these volumes, then you will get a prompt that your disk will be converted into dynamic disk. आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन. बट बात आती है कि सर ये जरूरत क्या है इसकी, क्यों क्रिएट करें इसको? अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे. पॉइंट्स कैसे? तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से कि अगर हमें मल्टीपल हार्ड डिस्क के स्टोरेज को कंबाइंड करके एक लार्ज स्टोरेज क्रिएट करना है, एक लार्ज ड्राइव क्रिएट करना है, इन दैट केस व्हाट वी शुड डू? Suppose we want a facility for fault tolerance. In case our hard disk, one hard disk is not working or it is damaged, can we get our data from another hard disk? Can we recover lost data? Because yes, sir. at In some RAID, point- in RAID we can. in RAID we can, in mirrored we can. Okay, that's why we use dynamic disk facility, and at dynamic disk we create different types of volumes to create a large drive for the fault tolerance, data recovery. फाइन. तो स्टोरेज मैनेजमेंट जो हम लोग अभी समझ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको अभी एक्चुअल में गाइड कर रहा हूं कि आखिर हमें फायदा क्या है. फायदा होगा तभी तो उसको आगे समझने में लगता है अच्छा ठीक है इसलिए ऐसा करते हैं. ओके Yes. नाउ Yes. तो ये फर्स्ट जो डिस्क है, डिस्क 0, आई एम गोइंग टू लीव दिस डिस्क एज इट इज, बेसिक डिस्क, बट बाय यूजिंग दीज 4 डिस्क आई विल क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स. ओके नाउ ध्यान से समझना किसमें क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है. नाउ all this disk is 100% free. All these 4 disks are 100% free. If I'm going to convert this into as a dynamic disk, then first of all right click on it, then convert to dynamic disk. Okay, now I'm going to convert. Now it is asking disk 1 only or 2, 3, 4. I have marked all new disk. Now all these 1, 2, 3, 4 disks will be converted into dynamic disk. Now see, all these are in dynamic state now. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now I'm just going to right click on any disk. For example, first disk, disk 1. Simple volume you can create easily, but I'm going to create it. Fine. It will ask for a space. I'm giving full space. Next, drive letter E, NTFS, new volume. You all know it well. Fine. We have created a simple volume. Now see, the color of this line is represented here, simple volume at the bottom of the screen, simple volume. Okay. Now, if we have to increase the space of this volume, can we do it? Simply as per your
previous knowledge or basic knowledge. We can't do it No, sir. because we have only, sir, one hard disk. I have used all space. How can I increase the space of my hard disk? Fine. Now, at dynamic disk, we can increase the space of this volume, means E drive, very easily by using the space from another hard disk like this 2, 3 and 4. हम आसानी से बढ़ा सकते हैं space. Now I'm going to right click on it, extend volume. Fine. Still I'm getting this option, extend volume. Extend. Now next. Yes, sir. Now it is asking this 2, 3, 4. कौन सा लेना चाहते हैं? I have selected this 2. Then add it. Fine. 80 GB. Yes, sir. This 3. Fine. Again 60 GB. This 4. Means already it has 60 GB and I have added 60 GB, 80 GB, 80 GB. यानी कि 80, 80, 160 plus 60, 60, 120. 200. 280. 280, no. Is it correct? No? 280 GB total? Yes, 280 GB. तो 280 GB का एक सिंगल ड्राइव बनने जा रहा है. If you want, no, I would not like to take whole space from another hard disk. You can specify the space as much you require. Like from this 2, I'm just going to use 10 GB, means 10,000. Fine. This 3, again 10 GB. This 4, again, in this case 20 GB. Approx 20 GB, 20,000 MB. Fine. Now, click on next and then finish. Now see, the space of this drive spanned now 60 GB. This value should increase. 60 Refresh. GB, 10 GB, 60, 10, 70, 70, 10, 80, 80 plus 2, 90 means it should be around 100 GB. 100 GB होना चाहिए. Okay, it is taking time. Just I am going to close it. Once again, I am going to open. Yes, 98.94 GB. Yes. Means by using multiple hard disks and taking a space, different space from different hard disks, or we can take whole space also. We can create a large drive at a dynamic disk. But one more thing, if you are going to increase the space of a hard disk by taking space from another hard disk, अगर आप किसी पार्टीशन का स्पेस दूसरे हार्ड डिस्क से स्पेस लेकर के बढ़ाने जा रहे हैं, in that case your volume name will be changed, volume type will be changed. Now it is spanned volume. It is known as spanned volume. Fine. First of all, we have created simple volume, and then we have extended the space of simple volume by taking a space from another hard disk.
In that case, now it is spanned volume. Means in a spanned volume, we can use multiple thousands of hard disks. We can take whole or part space from different hard disks and we can create a large drive. Now we have a 100 GB drive. Yeah. Any doubt, my dear? Anybody, any doubt? No, sir. No. No, fine. But in simple volume and in a spanned volume, in both cases, there is no any fault tolerance facility. कोई fault tolerance नहीं. एक भी हार्ड डिस्क अगर मिस करता है तो आपका ये वॉल्यूम डैमेज हो. One more demerit with spanned volume is that it is slow. It is slow. धीरे काम करता है. तो इसके जगह पे now I'm going to delete this volume. Can I delete? Yes. Delete volume. Yes. अगेन ये बेसिक में बदल गया ना सारा. हो गया, कोई नहीं. तो इसकी जगह पे एक और कॉन्सेप्ट है. You can create stripped volume. In a stripped volume, read-write capacity of your drive is higher than the spanned volume, but it takes equal space from all hard disks. Equal space from all hard disks. Suppose, look, I'm just going to create stripped volume. Fine. Next, from one hard disk, I'm taking 60 GB space, and second hard disk, again 60 GB. But I have just added 80 GB hard disk, but it is taking only 60 GB because it will take equal space from all hard disks. So it will decide as per the minimum capacity of any hard disk. किसी भी हार्ड डिस्क का जो सबसे कम स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगा. Yes. अब फिर अगेन 60 GB, चलो ये तो फुल यूटिलाइज हो गया, बट ये फिर 80 GB का दे रहा हूं तो फिर 60 GB ही रहेगा. Now next, next, next and finish. क्या कह रहा है? The operation you selected will convert the selected basic disks to dynamic disk. Yes, हमें तो पता ही है कि मैं डायनेमिक डिस्क पे होने वाले काम को बेसिक डिस्क पे कर रहा हूं तो it will automatically convert. Yes. Now, yes. Fine. From disk 1 and disk 3, whole space occupied, used means in the drive. But from this hard disk, only 60 GB taken. From this hard disk, only 60 GB taken. Still, the disk 2 and 4 has 20 GB and 20 GB free space, unallocated space. Yes. सारे लोगों को समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir.
सर ये फॉर्मेटिंग में हो क्या रहा है, डिस्क क्लीन कर रहा है क्या? इंडेक्स टेबल बना रहा है। फॉर्मेटिंग में क्या होता है, न्यू इंडेक्स टेबल जनरेट करना। हम्म इंडेक्स टेबल बनाएगा तभी तो हम लोग डेटा स्टोर कर पाएंगे। यस, तो ये डेटा तो कभी क्लीन होती नहीं। Okay, fine. And in this strict volume, speed is better than span, but still we have no any fault tolerance facility. अगर अभी भी कोई हार्ड डिस्क डैमेज होता तो गया, यस है ना? तो अब इसके जगह पे एक सॉल्यूशन आया कि अगर आप फॉल्ट टॉलरेंस चाहते हैं, अपने डेटा को चाहते हैं कि वो बचा, तो नेक्स्ट वॉल्यूम आई, दैट इज मिरर्ड वॉल्यूम। इन मिरर्ड वॉल्यूम we can use only 2 hard disks, not less than 2, not more than 2. And both hard disks should be of the same size, or otherwise it will take same space from both hard disks. Now in case of mirroring, as mirror means आईना, आईना क्या करता, वो हमें ही रिफ्लेक्ट करता है। The same thing will happen. Suppose I am going to take 80 GB 2 hard disks, 80 GB plus 80 GB. In that case, we will have capacity to store data of 80 GB only. But in mirroring, it will keep a copy of data at another hard disk. In case your one hard disk is going to is down, in that case, you can get your data from another hard disk. Mirroring के case में. Now see, it has total 240 GB approx space, 60 GB from each drive, 60 into 4, 240. यस Fine. Now, delete volume. हाँ, one more thing. इस तरीके से कभी कभी करने के चक्कर में क्या होगा कि ये हार्ड डिस्क डैमेज हो जाएगा। ऐसा वर्चुअल पे कई बार एक्सपीरियंस किया मैंने। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू कि इन केस समबडी विल ट्राई इट एंड ही विल फेस द सेम प्रॉब्लम, तो डोंट वरी, ऐसा होता है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ mirrored volume. Next, we have 3 more disks. I'm just going to connect one more disk, 80 GB. Next. Now, it has taken only 60 GB space from another hard disk also, because as I have stated, it takes equal space from all hard disks. One more thing, I have 2 more disks, but I have no add option. Means in mirroring, we should use only 2 hard disks, not less than 2, not more than 2. So I'm just going to click next, 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 and finish. Yes, convert to dynamic. Fine. Yes. यस
after completion of the formatting, I will keep some data at this drive, in this drive, and then I will just unlist one hard disk or just damage one hard disk, and then we will I will try to access my data from another hard disk. Okay, तब पता चलेगा कि हाँ रियली ये मिररिंग करता है कि नहीं करता है. Now drive is ready. This drive letter is E, and total space is still 60 GB. Fine. I have added 60 GB, 60 plus 60, and it should be total 120, but it is only 60. E drive, clear? Yes. Yes. Now I am going to put some data into this drive. E drive, just hello. फाइल, एक फाइल है हमारी इसमें पड़ी. अब डिस्क मैनेजमेंट का यूज करते हैं. किसी भी एक हार्ड डिस्क को ले लेता हूं, फर्स्ट ही हार्ड डिस्क. इसको एक काम करता हूं, सिंपली ऑफलाइन कर देता हूं. डिस्क है ही नहीं. अब यहां पे एक मैसेज आया, फेल्ड रिडंडेंसी, क्योंकि मिररिंग किया ही था हमने रिडंडेंसी के लिए. रिडंडेंसी फेल हो गई, लेकिन हमारा यहां पे भी आ गया ई ड्राइव पे गड़बड़ है. चलो भाई ठीक है, तो डिस्क मैनेजमेंट दिख रहा. मेरे डेटा का क्या हुआ है या गया? कट इट. कंप्यूटर ओपन करें, अभी भी ई ड्राइव है. ठीक है, ओपन करते हैं, डेटा भी है. बढ़िया. Yes. सर ऑफलाइन करने पे ये डिस्क स्पेस गायब नहीं हो सकता है? हाँ, डिलीट कर देता हूँ, उसको रिमूव कर दूंगा मैं वहां पे जाकर, मतलब फिजिकली हटा देना ना. सर और ये ऑफलाइन करने पे उसका मिरर भी ऑफलाइन हो गया तो? हाँ, अब फर्दर जब आप, इसलिए बोल रहा है रिडंडेंसी फेल, कि अगर आप फर्दर फिर इस ड्राइव का यूज करते हैं और एक्सपेक्टेशन होगी कि चलो मिररिंग तो हो ही रही है, मिररिंग नहीं हो रही है. अब आप एक सिंगल हार्ड डिस्क में डेटा रख रहे हैं, अगर वो भी गया तो गया. ठीक है पंकित? यस सर. फाइन. नाउ ठीक है, कोई बात नहीं, इस ड्राइव को डिलीट करते हैं. डिलीट वॉल्यूम, यस. ठीक है, ये ऑफलाइन है, इसको अब ऑनलाइन लेते हैं, करते हैं ऑनलाइन. Sorry, time is going to be up. Okay, I will cover RAID partition in next class. Fine. ओके यस सर. RAID है. अब पता नहीं, कोई आज तो 3 बच्चे बोल रहे हैं
I'm just going to stop my sharing first.